Hi guys, what's up? Welcome back to my channel. So in today's video, I am going to showcase or I have purchased like the cheapest makeup from Nykaa. So these are the products that are like on the lowest side when it comes to Nykaa. तो बहुत पूरा मेकअप का बेस मैंने खरीदा है फ्रॉम फाउंडेशंस टू कंसीलर्स एंड एवरीथिंग a lot of YouTubers have done this and I've got inspiration from them. So it's not like original idea of mine. ये बहुत ज्यादा पहले का वीडियो है, but I am doing it now. मैंने बहुत पहले परचेस किया था, but I didn't get chance to make the video. Anyways, before starting off, guys, make sure that you subscribe, hit the bell icon. I post every Tuesday, Thursday, Saturday, and sometimes on Sunday. बीच में मैंने एक वीक का गैप ले लिया था. I was not well, but I will post in this day. These are my dates when I post my videos and. I just wanted to purchase them because मुझे देखना भी था कैसे ये प्रोडक्ट वर्क करते हैं लो वाले. मोस्टली जो प्रोडक्ट्स है ज्यादा ब्लू हेवन ब्रांड के ही है, बट समटाइम्स सम ब्लू हेवन प्रोडक्ट्स आर लाइक एब्सोल्युटली हिट, बट सम आर like just miss. But anyways, these are all the products that I have, like from base to eyes to lips, everything. So I'll just start from basic and then I will let you know. I will keep on reviewing the products. ठीक है? Them already before, बहुत टाइम तक मैंने उसको यूज किया है. That's the reason I'm making this video. But इस वीडियो में specifically I'm not going to do like makeup and show you, but I'll just overall give you like some mini kind of reviews. So when you see the primer, तो primer में first it comes is VLCC का Glam Glow 10 Skin Perfector tinted SPF 30 PA+++. So it's like a cream. इसमें प्राइमर में सबसे चीप में यही आता है. The price and the product का फोटो will be on the screen only, तो आप देख लेना. Price keeps on fluctuating because of the sale. So this product is not bad. I will not say it's not like it's not good. बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, but बहुत ज्यादा bad भी नहीं है. It does work. It's like प्राइमर. इसको प्राइमर क्यों बोला है? बिकॉज इट हैज द सिलिकॉन बेस. तो इसका जो कलर है, इट ऑल्सो हैज टिंट, सो इट हैज काउंट, बट इट एज आई सेड इसमें थोड़ा ग्लिसरीन और इट हैज सम काइंड ऑफ क्रीमी टेक्सचर. तो बेस के लिए इट वर्क्स. सो हाउ आई लाइक अबाउट द प्रोडक्ट इज लाइक मैं जब इसको इस्तेमाल कर, इट फील्स लाइक योर स्किन इज जस्ट ब्लर्ड आउट. दैट इज व्हाट इट फील्स. सो ओवरऑल it's definitely a good product to purchase if you're looking for like absolutely cheap and affordable primer. You can go with this. Brand is also very nice, so I will recommend this. Okay, foundation में the cheapest one is the Blue Heaven waterproof makeup foundation. This product just sucks. I got this because of the video, but this product when I purchased, I didn't use after one use because it is just not worth it. Even if the price is absolutely cheap, it's like 60 or 100 rupees में कुछ आपको आएगा. 75, हाँ 75 the MRP is, you will get it for more cheap price in the sale. This product does nothing. The texture of this is like absolutely water. It doesn't give any coverage. This doesn't even show that you're wearing any kind of foundation. It's not. Don't even think of like hiding all your flaws. And it also has some 2 or 3 shades, and all the colors are also just pink, like pink undertone में ही है. So I will not at all recommend this particular foundation. It's just waste of money. If you want to just use it and see how it works for you, you can give it a shot. But from my side, I'm a professional makeup artist also, so I will highly recommend you to not get this. Absolutely worst. It's concealer. So concealer में I got the Blue Heaven foundation. Like this is a foundation भी लिखा है, but actual stick. So it is very thick, like बहुत ही ज़्यादा thick consistency इसका, like this actual stick. So you can use it as a concealer also. Foundation, very good product. It has coverage. The shade just sucks. There are no shades, so you have to see shades. And accordingly, अगर आपके skin tone के हिसाब से आपको shade मिल जाए तो it will work. This is like, and most of the shades जो इनमें है, all of them are like pink undertone, which doesn't work on our skin type. So I'm like kind of blah about it. But otherwise, the actual consistency, the quality, the the thickness and the coverage is absolutely amazing. It's really good. I've used this on like my pink undertone mom clients. It works on them. So as I said, it's not a bad product, but skin tone के हिसाब से not to buy. But if you have this pink undertone, if you're absolutely fair, you can definitely give this sticks a shot. पे खत्म हो गया था, so I don't have here to show you, but I definitely had. So again, it's by Blue Heaven. So I got this and I've used this a lot on my clients. So as you know, I'm a as I've said like number of times. So I do makeup on my clients and stuff. तो उसमें वो वाला फाउंडेशन, वो वाला कॉम्पैक्ट मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा. ब्लू हेवन का ये फोटो रहेगा. बट रिसेंटली व्हेन आई वाज चेकिंग अगेन, एज आई सेड, मैंने ये सब प्रोडक्ट्स बहुत पहले परचेस किए थे. सो नाउ इट्स लाइक ऑल्सो सम और अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स आ गए हैं मार्केट में. तो अभी के लिए मैंने चेक, सो इट वॉज ओलिविया का कुछ कॉम्पैक्ट था. But I don't know how good it is. I have not used it. But for me, the cheapest that I got from Nykaa was the Blue Heaven one. It is very good. ज्यादा शेड नहीं है इसमें, वही प्रॉब्लम रहता है. But the compact is really like coverage देता है. It's not like high coverage वाला compact, but अच्छा कवरेज ठीक है दे देता है आपको, अच्छे से मैट भी कर देता है आपके फेस को. So I
will highly recommend if you want to buy the basic compact. It is kind of comparable from with like the Maybelline one, the super fresh Maybelline वाला मेरे पास वो है. So it is absolutely उसका ड्यूप ही है, तो उसमें ज्यादा पैसे का फर्क भी नहीं है. It is like something 100-150 only, but it's also really worth it. Loose powder. Now loose powder में the cheapest is the Blue Heaven Sapphire translucent powder. Now this has some kind of color. These have 2-3 colors. So the color of powder is absolutely good. The loose powder is very mild. अच्छे से आपके today also I have applied the powder under my eyes. Mostly मैं powder look नहीं करती हूँ. I just go with like glowy and dewy look on my face. But today for this video I just wanted to show that how matte and how seamless a makeup looks. I have used this a lot on my clients, but only the downside is the fragrance. It has so much of fragrance. So when it comes to your face, so much of fragrance ज्यादा recommended नहीं है, but it will not linger, ज्यादा टाइम तक नहीं रहता फेस पे. But still guys, this product has a lot of fragrance. I will show you the even the dabba is really nice. The shade is like banana kind of shade, very good for Indian skin tone. बहुत ही ज्यादा yellow undertone है, तो it will really brighten up your under eyes and give you that really like photogenic look. It's absolutely good product. But fragrance, इसका literally fragrance is those like powders that you wear on your neck and stuff when you were a child. वैसे fragrance है. But if you're okay with the fragrance, get your hands in this. Absolutely good. Next one is blush. Again, the cheapest blush for all Nykaa is the Blue Heaven blush. This product is absolutely not to buy. Not to buy. It is like zero pigmentation. Like when you buy blush, you expect something to there on your like कुछ तो आना चाहिए cheeks के ऊपर. First of all, ये packaging है, इसका वो जो ऊपर का screen है वो भी टूट गया, उसका जो कांच है वो भी टूट गया. I will show you that this is the product. I got absolutely good shade. This is 502 blush and it's really cool, amazing color for Indian skin. But see, I'm just showing you how much I'm rubbing here on the product. And still there is no pigmentation. There is no pigmentation. Like if you take your finger and swipe it like 2-3 times, you will still get barely any kind of pigmentation. There is no pigmentation in the product, and it's also very hard. Like इसका जो press, जिस तरह से product को press किया है उसके packaging में, it is very hard. बहुत ज़्यादा creamy, soft, कुछ texture नहीं है इसका. ऐसा लगता है it's just a stone that is in color. It is like very like ये product if they had pigmentation this would be absolutely amazing because इसमें थोड़ा सा sheen भी है. It has that sheen kind of formula that has it with blush and highlighter दोनों का काम कर देगा. ऐसा product है, बहुत ही ज्यादा अच्छे से इसको मतलब बनाया है. But still the formulation में ज्यादा research नहीं किया है Blue Heaven ने. Definitely not to buy. हाइलाइटर में अगेन देयर वाज द ब्लू हेवन सफायर वाला शिमर डस्ट. तो ये शिमर डस्ट आई शेडो के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है. इसे डिब्बे में आता है, इसमें बहुत ज्यादा कलर्स है. तो ऑब्वियसली हाइलाइटर बेस पे यू नीड गोल्डन और शैम्पेन और काइंड ऑफ लाइक कूल टोन और वार्म टोन. ज्यादा वार्म टोन तो डार्क स्किन पे जाएगा. सो आई गॉट ओनली दिस बिकॉज मुझे पता था इवन इफ आई गेट इट आई विल मेक सम काइंड ऑफ यूज आउट ऑफ दिस और माई क्लाइंट्स ऑल्सो. तो आई शेडो के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा वर्क करता है. हाइलाइटर के लिए बिल्कुल नहीं. इट इज वेरी पिगमेंटेड, बहुत ही ज्यादा इसमें चमकी. ये प्रोडक्ट इज नॉट लाइक एक्चुअल आई शेडो के जैसे अच्छे से वो हाइलाइटर कैसे वो सीमलेस उसमें हाईलाइट रहता है, राइट. दिस हैज दिस चमकी ग्लिटर काइंड ऑफ थिंग, सो इट्स गुड फॉर योर ओवरऑल आईज. बट चीज के लिए नॉट एट ऑल. सो इफ यू आर परचेसिंग दिस फॉर आईज डेफिनेटली गो फॉर इट. बट हाइलाइटर के लिए फेस के लिए नॉट टू. काजल. नाउ फेस का तो ये बेसिक क्लियर हो गया. नाउ काजल के लिए द चीपेस्ट वन इज VLCC का छोटा वाला काजल. आई हैव यूज दैट ऑल माई कॉलेज लाइफ. अभी नहीं है शोकेस करने के लिए बिकॉज आई हैव लेफ्ट यूजिंग इट बिकॉज द काजल इज गुड बट इट इज very smudgy. तो as I said, the smudgy, the cheap the product, the cons are more, right? तो product आप use करते हो तो it will be there on your eyes for like 2-3 hours. After that it will smudge. Even if you touch your fingers गलती से, it will like smudge. So college student के लिए I will highly recommend. But if you're like you want that kind of kajal which is like smudge proof and has all the benefit of long lastingness, not to buy. Okay, now the eyeliner. Eyeliner में the cheapest one is Blue Heaven Line and Design Sketch Eyeliner. Now there are a lot of liner in pencil form, but the liquid the sketch form में यही था cheapest. So I will highly like get. This is a very fantastic product. Even Shreya Jain, when she did some Blue Heaven का कुछ brand का product, she recommended only this to buy. It's like line and design sketch eyeliner Blue Heaven का. It's very long lasting. आपके eyes पे बहुत time तक रहता है. Also the tip is very like thin. अच्छे से आप इसका wing liner कर सकते हो, different designs कर सकते हो. Also it is not that expensive. आपको 150 में कुछ मिल जाएगा. I will highly recommend this eyeliner if you want like in an affordable and cheapest side में. This is really good and absolutely to purchase. Mascara में again Blue Heaven mascara. This is the walk free waterproof long lash mascara smudge
proof that doesn't do anything. So this mascara is just something that is like sitting in my vanity doing nothing. Just for this video I have kept it. I will throw it after the video. The mascara looks like absolute, the packaging मतलब एकदम अच्छे से color वालर है, but the product doesn't do anything. The wand is also great, but this has no color payoff when you're applying. Even like your natural eyelashes, जो आपके actual eyelashes है वो भी ऊपर होती नहीं. Forget about like fluttery and separating and giving volume and all. Forget about all the work of what mascara does. वो तो करता ही नहीं है, बट बेसिक आपके एक्चुअल आईलैशेस को भी ऊपर करता नहीं है. व्हाट इवन आईलैश कलर डज, राइट? तो ये भी करता नहीं है. द प्रोडक्ट इज जस्ट वेस्ट ऑफ मनी. आई थिंक आई विल यूज दिस एज लाइक आईब्राउ थिंग. मे बी आई कैन यूज दिस लाइक दैट. हाँ ठीक है, ये कर सकती हूँ. यूज दिस प्रोडक्ट जस्ट टू सी एंड टेस्ट इट. तो मैंने उसको लगाया, तब तक मैं अपना दूसरा कुछ काम कर रही थी, बट आफ्टर इवन 15-20 मिनट द प्रोडक्ट वॉज नॉट ड्राइड. तो वाई विल यू हैसल सो मच? जस्ट गेट लाइक गुड अमाउंट, लाइक गुड 200-300 का Maybelline के मस्करा. योर वर्क इज डन. सो दिस प्रोडक्ट is absolutely not to buy. there इंडिविजुअल में बहुत सारे थे, पर मुझे एक पैलेट लेना था, तो उसमें अगेन ब्लू हेवन का द आई शेडो पैलेट विद फैशन आई शेडो पैलेट. दिस इज द पैकेजिंग. कुछ इस्तेमाल किया नहीं है, जस्ट केप्ट इट फॉर द वीडियो. This is the product, so it has like good amount of shades, as you can see, like yellow, blue, purple, this and that. The product has good amount of pigmentation also. If I can show you, this is the pigmentation. The product does show pigmentation, but the pigmentation is just chalky. प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा चौकी है. इट विल नॉट लाइक स्टे ऑन योर आईलिड. दिस इज लाइक अ प्रोडक्ट विच आर गुड फॉर किड्स. तो किड के मेकअप के लिए उनको इस्तेमाल फन करने के लिए दे आर गुड. स्मज एकदम, इट विल, इट्स जस्ट पाउडर. देखो literally just powder. It will dust it off and there is a lot of shimmer particles. So these are the actually like, most of the cheap and affordable, not affordable but जो cheap makeup रहते हैं, जो रास्ते में भी आपको मिलेंगे, उसमें बहुत ज्यादा चमकी हो जाती है. They have this chunky glitters, not good for like actually good amount of makeup look के लिए अच्छा नहीं लगता. बट चीप में यही था. तो इफ यू आर इवन ट्राइंग टू परचेज दिस, डोंट परचेज. आप देख के आपको लगेगा बहुत अच्छे शेड्स है, यू विल परचेज इट, बट दिस इज एब्सोल्युटली जस्ट नॉट यूज एट ऑल. आप एक घंटा भी आपके आईज में रहेगा तो मुझे कमेंट करके बता देना, बट आई मुंह में फेस में पूरा चमकी हो जाएगा. तो एब्सोल्युटली नॉट टू बाय. द चीपेस्ट लिपस्टिक वो Ellie के लिपस्टिक. सो I absolutely swear by Ellie lipstick. These are the college love. I have been using Ellie all my college life, and everyone will recommend the cheapest and affordable में and बहुत ज़्यादा अच्छा quality में Ellie. So they also have this crayon that they launched quite recently. So the crayon is also good, and the actual lipstick bullets are also good. They have like amazing shade variety that you can choose: red, pinks, mauve, browns, nudes. They have a lot. So lipstick में cheapest में you can get Ellie. मुझे बहुत अच्छे है. Okay, that's it from my side today. I hope that you liked this. If you want such more makeup kind of related videos, definitely let me know. And if you have any suggestions, if you want me to do any kind of more videos that what you want me to do, definitely let me know in the comments. Make sure that you subscribe if you have not. And yeah, I will see you in my next video. Till then, take care.